Yes, welcome everyone. Uh, Today we will discuss the methods of charging because in last two videos actually we discussed the basics of electric charge and fundamental properties of the charge, and then we discussed the example 1.2 and 1.3. Now we will discuss the methods of charging. See, methods of charging is actually it is about the uh, it is about three different methods to charge any body. Suppose uh, if we take phenomena of friction, so if we rub the two bodies, so due to friction, obviously there is a heat energy generated between the two bodies, and obviously the valence electrons or the valence electrons or outermost orbit electrons, this electrons gets the energy, and especially the loosely bound electrons gets the energy from the from this heat energy due to friction, and they acquire or they absorbs the energy, and they get free from the Coulomb's attraction of the nucleus from a particular body. Second thing is about the uh, charging by conduction. So there is a second method in which if we bring the two bodies in contact, and there is a exchange of charges, and especially if we talk in general, so it is something like that. Okay, charges flow from higher potential to lower potential. Also in depth also we can say that the positive charges flow from higher potential to lower potential. Same for the negative charges, they transfer from lower potential to higher potential. So it is something like that in charging by conduction, and one body charged the another body, right? Then third method is about the charging by induction. So all these three methods we will discuss in this video. First of all, we will take the charging by friction. See, charging by friction, it is very simple, and we will start with the one best example. If we take the glass rod, and if we rub with silk cloth, right? Now, see, there are two different bodies, and what we are considering that initially both are uncharged, so charge on them is zero. It means there are equal number of positive charges and negative charges in a body. Now, if we rub this glass rod with the silk cloth, so obviously there is a friction between these two. Out of this two body, any one body loses the electron. And why it loses the electrons? Because obviously both are different bodies. So obviously in atoms of these two, the interaction of outermost electron with the nucleus will be different because these two bodies are different. Material is different. So obviously its characteristics or properties are different. So electrons of this and electrons of this both have different interaction, different magnitude of Coulomb's attractive force with the nucleus. So अब कौन सी बॉडी होगी हमें पता नहीं, बट फ्रॉम दिस suppose if we take glass rod and silk cloth, and if we rub these two body with each other, something like this glass rod with the silk cloth, glass rod loses the electrons. Ready? Glass rod loses the electron. Why? Because the electrons or the valence electrons or the outermost electrons are loosely bound
with the nucleus comparatively with the electrons of the silk cloth. So glass rod loses the electrons, and these electrons gets transferred on the silk cloth. So see here, one negative charge increases, and obviously it left the positive charge behind it, because here glass rod loses the electrons, it loses the negative charge, so obviously it becomes positively charged, and one negative charge on the silk cloth increases due to this. So we can say that silk cloth becomes negatively charged. And see यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी बता सकते हैं कि बिफोर ऑब्वियसली on both the bodies the charge was zero, both are initially uncharged, and after the charging, see if we do the algebraic sum of these two charges, so obviously again we will get the net charge zero. So this is about the conservation of electric charge. तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल हो गया. दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. एंड सी देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज. ये पूरा एक बॉडीज का सीरीज है ऐसा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि विच बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड विच बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. बिकॉज हमें कैसे पता चलेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल. इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आपको कहीं भी मीन्स बहुत सारी रेफरेंस बुक में या गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा. सो positive charge, negative charge. Obviously now due to friction, positive charges will transfer on the negative charge, on the silk cloth, and silk cloth becomes negatively charged. So this is the charging by friction, and this is one of the best example of conservation of electric charge. ये भी हम बता सकते हैं यहाँ पे. So I think this is enough for this charging by friction. Now we are taking second example, second method. This is about the charging by conduction. See, in charging by conduction, ready? In charging by conduction, again it is a very simple phenomena and simple method. See, from this method also we can charge the body, and that is about the charging by conduction. अब नाम से ही पता चलता है conduction, it means there is some conduction between the two bodies, or also we can say that there is a contact between the two bodies. So here it is very simple. If we take one body, suppose it is initially positively charged, ready? And suppose that charge is Q, and that is body A. Now suppose another body, another identical body. ये point बहुत important है. We are taking identical body because हम एक basic discuss कर रहे हैं. इसका जो general theory है वो हम इसका capacitance, electrostatic potential and capacitance, second chapter जो है उसमें उसको हम study करेंगे. So it is very simple and general method. When we are taking one body, it is initially charged, and here we are taking that it is positively charged. Second one is suppose uncharged. Charge on it is 0. It means charge on B is 0. So it is uncharged. Now if we bring them in contact, अब direct contact में भी लेके आ सकते हैं, एक वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कंडक्टिंग वायर से भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं. So A and B, there are two different bodies. We are bringing them in contact by connecting the wire, or if we directly bring them in contact, so we can charge this uncharged body by using this positively charged body. Okay. Now obviously there is a flow of charges. अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. अभी के लिए आप इतना याद रख लो, इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. आइडेंटिकल बॉडीज है दोनों. आइडेंटिकल का मतलब ये है कि बोथ हैव सेम डायमेंशंस, बोथ हैव सेम मटेरियल, सेम मीन्स डायमेंशन मीन्स रेडियस, बोथ हैव सेम मटेरियल, दोनों सेम बॉडी है. नाउ
after this, after charging, charge after charging on them, तो उसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है. सिम फार्मूला हम ऐसे याद रख सकते हैं, चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी प्लस चार्ज ऑन द सेकेंड बॉडी डिवाइडेड बाई 2. So Q or charge after this charging will be like this, QA by 2, because QB क्या है, 0 है. तो after charging, ready, charge on this will be QA by 2 and here QA by 2. So charge on them will be same or both will be positively charged. So here we can say that both the bodies are positively charged after charging. Ready? So initially जो फर्स्ट बॉडी था जिससे हम चार्ज कर रहे थे वो कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था. आफ्टर चार्जिंग दोनों कैसे हो गए, पॉजिटिवली चार्ज हो गए. और दोनों के ऊपर चार्ज कितना होगा, सो इट इज QA upon 2 means charge on the first body divided by 2. So this is for identical bodies. I think it is very simple method. And now we are discussing the charging by induction. और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देखो ना तो फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं और ना ही कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं. हियर दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो इसमें कुछ इंड्यूस हो रहा होगा, नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें कुछ किसी यहाँ पे चार्ज का इंडक्शन हो रहा होगा या कुछ ऐसा हो रहा है, उधर इंड्यूस चार्ज होगा या इंड्यूस प्रॉपर्टी कुछ ऐसा कुछ होगा. तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. वेरी सिंपल मेथड. अगेन हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग वन uncharged body. It means charge on it is 0. Uncharged body, it means there are equal number of positive charges and negative charges inside the body. So charge on the body is 0 and it is isolated from the surrounding because वो हमें condition दिखाना है कि ये तो एक conducting material है लेकिन surrounding कैसा होना चाहिए, dielectric होना चाहिए. अब dielectric क्या है वो next वीडियो में डिस्कस करेंगे कभी. तो dielectric means nothing but it is non-conducting materials, and this type of materials actually they do not conduct the electricity but they can transfer the electrical effect. It means it can transfer the electric field. Effect का मतलब वही हम करते हैं. So this is one uncharged body. It is isolated from the surrounding. Now we are bringing one positively charged plastic rod near to it. We are bringing positively charged plastic rod near to it, and because of this positive charge, मैंने बताया था आपको कि it can transfer this in between or intervening medium can transfer the electrical effect. So the effect of this positive charge is obviously transfer through the surrounding dielectric medium, and here the already we know that there are equal number of positive charges and negative charges inside the body. That's why it is uncharged. So obviously negative charge inside the body gets attracted towards this plastic rod or positively charged plastic rod, and obviously हम जानते हैं कि like charges repel each other, so positive charges gets repelled on the other end of the body. Now obviously distance between the charges, here positive charge and negative charge, it is comparatively less as compared to this positive charge and this positive charge. And if we already know that Coulomb's law has inverse square dependence, F proportional to 1 by R square. So obviously this repulsive force is comparatively
weak in magnitude as compared to this attraction. Now actually still it is uncharged and we want to charge, because मेथड तो वही है कि भाई चार्जिंग बाय इंडक्शन, हमें कुछ चार्ज तो करना है. किसको चार्ज करना है? जो अनचार्ज बॉडी है उसको चार्ज करना है. बट सी, here there is a attraction between the unlike charges, there is a repulsion between the uncharged unlike charges, but still it is uncharged, neutral. But we want to charge this body by using this positively charged plastic rod. So now what we will do, we will connect this end of the sphere with the earth, और उसको हम ग्राउंड कनेक्शन भी बोलते हैं. और जनरली ग्राउंड को हमने ज़ीरो पोटेंशियल कंसिडर किया है, विथ मीन्स अर्थ पोटेंशियल को हमने रेफरेंस पोटेंशियल लिया है. सो V इज इक्वल टू ज़ीरो, पोटेंशियल इज ज़ीरो, तो हियर इट इज ग्राउंड कनेक्शन. नाउ अर्थ इज a good source of electrons, good absorber of electrons, and good source of electrons, good absorber of electrons. हम ऐसा भी बता सकते हैं यहाँ पे कि electrons from the ground gets attracted towards this positive charge and it neutralizes this positive charges. उल्टा भी बोल सकते हैं कि positive charges attracted towards the electrons of the earth and the ground. जो भी बोलना है, both are actually same. उल्टा फिनोमिना हो रहा है. देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ले तो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. वी आर टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस. सो हियर इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द अर्थ एंड इट न्यूट्रलाइजेस द दिस पॉजिटिव चार्जेस. सो व्हाट हैपन इफ आफ्टर दिस, सो इफ वी रिमूव दिस कनेक्शन, so now there are no positive charges on this body, it is only negatively charged, and now it has some negative charge on it. अब इसका काम तो हो गया है, because of this we are getting the charge on the body. और ये हमने इंडक्शन किया है, देखो कांटेक्ट में भी लेके नहीं आए हैं, फ्रिक्शन भी नहीं हुआ है. so we are charging the body without bringing in contact with the charged body. so यहाँ पे इंटरवेनिंग मीडियम कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ऐसा बोल सकते हैं. अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? प्लास्टिक रॉड को रिमूव कर देते हैं. सो इफ़ वी रिमूव द प्लास्टिक रॉड तो पिक्चर कुछ अब ऐसा हो जाएगा. नेगेटिव चार्जेस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी and now we can say that it is negatively charged. यहाँ पे आप लोग एक बात नोट कर सकते हो कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में देखो, जिस बॉडी से हम चार्ज कर रहे थे वो पॉजिटिवली चार्ज था, और दूसरा जो बॉडी चार्ज हुआ वो भी सेम पॉजिटिवली चार्ज ही हुआ. लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हुआ? अपोजिट चार्ज हुआ. देखो हम वी आर ब्रिंगिंग पॉजिटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर टू द अनचार्ज बॉडी, बट अनचार्ज बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, अपोजिटली चार्ज देन दिस वन. सो बिकॉज ऑफ दिस यार ये दोनों में एक डिफरेंस हम बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन. दूसरा डिफरेंस ये भी हो सकता है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट में लेके आ रहे हैं. इंडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? विदाउट ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट वी आर चार्जिंग द बॉडी. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द methods of charging, and here we discuss the 3 different methods: charging by conduction, charging by induction, एंड फर्स्ट हमने डिस्कस किया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. राइट? तो ये 3 मेथड है. ये तीनों मेथड का आगे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, तो उसको हम आगे जब नए वीडियोस में हम लोग देखते जाएंगे उसको कि इसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं हर एक मेथड को. ठीक है? चार्जिंग बाय कंडक्शन आप लोग ये भी देख सकते हो. देखो इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का एग्जांपल देना है तो वो एग्जाम्पल हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जो हमने डिस्कस किया था, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, वो हम वहाँ पे दे सकते हैं. सेकेंड हमने डिस्कस किया चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन भी एक मेथड है जिसमें हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो अभी हमने रिसेंटली यहाँ पे डिस्कस किया. ठीक है? थैंक यू सो मच.